All right, so we are going to solve the specimen paper for ACCA taxation today. So let's begin. Okay, question number 1. William is self-employed and his tax-adjusted trading profit for the year ended 5th April 2022 was 82,700. During the tax year 21-22, William contributed 5,400 gross into a personal pension scheme. What amount of class 4 NIC will William pay for the tax year 21-22? So exam has been started with like an easy question, not so much difficult. You have to calculate the amount of class 4 NIC. Class 4, that's paid by self-employed. William is self-employed and we need his tax adjusted trading profit. Do we need the amount of this gross personal pension scheme into it? No, we don't need it. Okay, class 4 will be applied on tax adjusted trading profit. So 82,700 को हम class 4 के bands में put करेंगे. Class 4 के जो bands हैं that will be given in your tax rates allowances or table in your exam. तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं. So इसको calculate करते हैं. We are having the text tables in front. Class 4 till 9568, it's nil. Question number 1, from 0 till 9568, amount is nil. Then the next band is 50,270 minus 9568. This is equal to 41,368. So the class 4 NIC is going to be 4312. Let's figure out the options there. So option B. So 1 ka answer B. Okay, let's move on. You are a trainee, chartered certified accountant, and your firm has a client who has refused to disclose a chargeable gain to HMRC. From an ethical point of view, which two of the following actions could be expected of your firm? ठीक है, तो अब पहला एक्शन रिपोर्टिंग अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस. ठीक है, आप सस्पिशियस हो सकते हैं कि आपका क्लाइंट चार्जेबल गेन डिस्क्लोज नहीं कर रहा, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है. एडवाइजिंग द क्लाइंट टू मेक डिस्क्लोजर, बिल्कुल यू कैन एडवाइज दिस. इन इन्फॉर्मिंग HMRC ऑफ द नॉन डिस्क्लोजर, ये आपका डोमेन नहीं है. ठीक है. Number 4, warning the client that your firm will be reporting the non-disclosure. Again, this doesn't come into your domain. ठीक है, आप क्लाइंट को वार्न या इस तरह की थ्रेट या कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, आप सिर्फ उसको एडवाइस कर सकते हैं. That's the ethical point of view. So 2A and B. Okay, moving on to question number 3. Martin is self-employed and for the year ended 5th April 2022, his trading profit was 1,11,100. During the tax year, Martin made a gift aid donation of 800 gross to a national charity. ठीक है, तो गिफ्ट एड डोनेशन जब भी होता है उसका इम्पैक्ट आता है टैक्स बैंड्स पे, वो एक्सटेंड हो जाते हैं. एक पहली चीज ये. बट ओवर हियर व्हाट आर दे आस्किंग? दे आर आस्किंग व्हाट अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस विल मार्टिन बी एंटाइटल्ड टू. तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, और हम सबसे पहले निकालेंगे इसके अंदर adjusted income. Okay, the personal allowance that will be allowed for that is 12,570. कितना reduce होगा? We are going to take out the adjusted net income for that. ठीक है, हम माइनस कर देंगे ग्रॉस अमाउंट, और इनकम एक्सीड हो रही है 1 लाख से. So this gives me 10,300. I'll divide it with 2. तो पर्सनल अलाउंस की जो रिडक्शन है
उसको पर्सनल अलाउंस कितना मिलेगा, माइनस करेंगे 7420। Question number 4. For the year ended 31st March 2022, Halo Limited made a trading loss of 180,000. Halo Limited has owned 100% of the ordinary share capital of Shallow. ठीक है, ये इसकी 100% subsidiary है and it began trading on 1st July. For the year ended, Shallow will make a trading profit of 224,000. ठीक है, हालो को लॉस है, वो इससे क्लेम करवा सकता है। ठीक है, इसके ग्रुप का पार्ट है, it's more than 75%. Neither company has any other taxable profits or allowable losses. What is the maximum amount of group relief which Shallow can claim from Halo in respect of the trading loss of 180,000? ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब है कि हालो लिमिटेड कितना लॉस अपना सरेंडर करवा सकती है। ठीक है, तो it's very simple criteria that we have. Maximum loss relief आपने निकालनी है, हम देखेंगे lower of, ठीक है। So 180,000, that is for the year ended 31st March. 1st July से started है trading, so July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. This makes 9 months. So हम क्या करेंगे, लॉस का 9 months, उसके बाद जो प्रॉफिट्स हैं जिसके थ्रू लॉस सरेंडर होगा, सो लोअर जो अमाउंट है वो हमारे पास आ रही है 135,000। तो 135,000 वो अपने जो लॉस है वो क्लेम कर सकता है। सो डी ऑप्शन। For the year ended 31st March 2021, Sizable Limited had taxable total profits of 820,000, and for the year ended 34 next year uske TTPs थे 970,000. The profits accrue evenly throughout the year. Sizable has had 151% group companies for many years. Okay, how will Sizable Limited pay its corporation tax liability? सबसे पहले corporation tax liability अगर installments में देगा तो उसके लिए उसको large company होना जरूरी है, और उसकी TTPs अगर हम देखें and there is no such information regarding डिविडेंड्स, तो यही हम इसको ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स काउंट करेंगे, और हम थ्रेशोल्ड अगर हम चेक करें तो इसकी सिर्फ एक ही कंपनी है, तो साइजेबल खुद और जो इसकी कंपनी है वो इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 2. सो 1.5 डिवाइड बाय 1.5 मिलियन डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 750,000. ठीक है, तो 750,000 से दोनों के दोनों प्रॉफिट्स एक्सीड किए हुए हैं, बट दिस इज लाइक नॉट द फर्स्ट पीरियड दैट साइजेबल इज अ लार्ज कंपनी। ठीक है, तो फिर कॉर्पोरेशन टैक्स जो होगा दैट विल बी सेटल्ड, आपको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में होगा तो इट्स गोइंग टू बी लाइक फॉर 2022 प्रॉफिट्स हैं उसके 970,000, मल्टीप्लाई करेंगे हम 19% से, ये उसकी लाइबिलिटी है, और डिवाइड बाय 4, क्वार्टर में आपने उसको पे करना है। So this will be 4 installments of 46,075 as it's a large company. Okay, question number 6. For the year ended 31st December 2021, Lateness Limited had a corporation tax liability of 60,000, which it did not pay until 31st March 2023. Lateness Limited is not a large company. तो उसने इंटरेस्ट चार्ज करना है, यानी कि अंडर पेमेंट है, सो फॉर अंडर पेमेंट द रेट इज गोइंग टू बी 2.6%, और उसकी जो लाइबिलिटी थी वो 60,000 थी, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स ही डिडंट पे, ही वाज सपोज टू पे इट टिल 31st March 2023, सो अक्टूबर से लेकर मार्च तक he should have paid that thing by September. So this makes October, November, December, 10, Feb, March, 6 months.
Question number 7. On 26 November, Alice sold an antique table for 8,700. Antique table had been purchased for 3,800. So chargeable gain. ठीक है. So for this हम 5/3 rule apply करेंगे और normal तरीके से भी करेंगे. So DP minus cost. The DP was 8,700. ठीक है. Cost कितनी दी हुई है? 3,800. Subtract करते हैं 4,900, and the 5/3 rule that will apply to for 5/3 rule 87,000, 6,000 जो कि deemed proceeds लिए जाते हैं, multiply by 5/3. So 4,500 is the lower of. So yes का आंसर होगा. Okay, question number 8. On 14 November 2021, Jane made a cash gift to a trust of 8 lakhs. ठीक है, CLT है, exemptions, okay, they have been deducted. Jane paid the IST arising from this gift. अब donor जो है वो खुद पे कर रहा है, तो the rate will be 25%. Jane has not made any other lifetime gifts. What amount of lifetime IST would have been payable in respect of Jane's gift to the trust? ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट गिवन है. कोई उसने गिफ्ट नहीं किए, तो NRV at the date of gift. ये IST पेबल आ गया. During the year, Malfred made 4 cash gifts to her children. Okay, IST perspective से हमें देखना है. So for each of the gifts listed below, which one is going to be exempt and which one is not going to be exempt? ठीक है, 400. This will not be exempt क्योंकि ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा है. ठीक है, 250 के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है. 142 मिनी a further 282 मिनी, तो ये दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि एक लाइक 250 इज द लिमिट फॉर ईच पर्सन, तो ये उससे ज्यादा है. 175 टू विनफ्रेड, तो ये स्ट्रेट अवे एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ओनली लास्ट वन इज एग्जेम्प्ट. क्वेश्चन नंबर 10. For the quarter ended 31st March 2022, Zim had standard rated sales of 49,750 and standard rated expenses of 22,750. Both are exclusive of VAT. Zim uses the flat rate scheme to calculate the amount of VAT payable, और वो 12% given है. Percentage reduction, okay. How much VAT will Zim have to pay to HMRC for the quarter ended? तो कितना VAT उसको पे करना पड़ेगा? So हम standard rated sales पे VAT निकालेंगे. Question number 10. 49,750 exclusive थी, तो हम देखेंगे उसके बाद straight away 12%. 716. फ्लैट रेट स्कीम हमेशा टर्नओवर पर अप्लाई होती है और इंक्लूसिव. ओके. Question number 11. Which two of the following assets will always be exempt from CGT? It's a very easy question. So cars and gilts. ठीक है, घर एग्जाम नहीं होता, chattels एग्जाम नहीं होते, उनकी अपनी टैक्स परस्पेक्टिव्स के साथ अकाउंटिंग होती है. Winston has already invested 8,000 into a cash ISA during the tax year. He now wants to invest into a stock and shares ISA. What is the maximum possible amount which Winston can invest? तो हमारे पास जो आइजा की लिमिट होती है एग्जाम्पशंस की, वो कितनी होती है? 20,000. ऑलरेडी वो 8,000 इन्वेस्ट कर चुका है, तो मजीद वो कितने कर सकता है? 12,000 और कर सकता है. सो 12 विल बी 11 का है 1 and 3. 12 विल बी ऑप्शन नंबर बी. 20,000 तक लिमिट है, 8,000 वो यूज कर चुका है, 12,000 और कर सकता है. Ming is self-employed. For each of the types of records listed below, click in the box to indicate
the date until which Ming must retain the records. It's very simple. कितना time required होता है filing date से? आपके पास till 5 years आपने अपने सारे records संभाल के रखने होते हैं, ठीक है, whether business or non business. So the filing date will be 31st January 2023 to 31st January 2028 for both. How much of Moon Limited's trading loss for the year ended 31st December can be relieved against its total profits of 96,000 for the year ended 31st August 2020? तो ईयर एंड हुआ पहले और उसको लॉस है, उसके बाद लास्ट ईयर की बात है, 4 month पीरियड एंडेड 31st December. तो ये शुरू कब हुआ होगा? अगस्त, सितंबर, नो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, सितंबर में स्टार्टेड और ईयर एंडेड 31st August 2020, ठीक है, 96,000. कोई और उसकी इनकम नहीं थी, तो वो कितना लॉस अपना क्लेम करवा सकते हैं? तो हम करेंगे लोअर ऑफ, ठीक है, उसकी इनकम कितनी थी? 43,000 4 महीने की, इससे रिलीफ करवा के जो लॉस बचेगा. सो सबसे पहले द लॉस हमें निकालना है जो बच गया है 62,000, ठीक है, और 4 months देयर, तो हमें बाकी 8 months के प्रॉफिट अवेलेबल हैं. और सो 96,000 is to 8/12. This gives you, तो आप कितना लॉस कवर करवा सकते हैं? 62,000, ठीक है. Last one. Nigel has not previously been resident in the UK, being in the UK for less than 20 days each tax year. For the tax year 21-22, he has 3 ties with the UK. What is the maximum number of days which Nigel could spend in the UK during the tax year without being treated as resident? ठीक है, उसके 3 ties meet हो चुके हैं, तो कितने days वो spend कर सकती है? It is going to be like how many days out there? So हम देखते हैं residence test. Where is the ties table? तो 90 डेज तक वो स्पेंड कर सकता है, और अगर वो 90 डेज से ज्यादा स्पेंड करेगा तो फिर ही वुड बी ट्रीटेड एज लाइक द रेजिडेंट विदाउट बीइंग, या तो ही कैन स्पेंड 90 डेज, तो उस पे वो रेजिडेंट ट्रीट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज 182 पे ही विल बी, और बाकी में वो टाइज वाली कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं हो पाती है. ओके, कमिंग टुवर्ड सेक्शन बी. Okay, in section B, we have specified questions like CGT, IST, VAT. ठीक है, इन तीनों पे एक एक MTQ आता है. Let's read it out. On 10 January 2022, Delroy made a gift of 25,000 shares in Dub Limited, an unquoted trading company, to his son Grant. Market value of the shares on that date was 240,000. Delroy had subscribed for the 25,000 shares in Dub Limited at par on 1st July 2011. Delroy and Grant have elected to hold over the gain as a gift of a business asset. Grant sold the 25,000 shares in Dub Limited on 18 March for 240,000. Dub has a share capital of 1 lakh. Delroy was the sales director of the company from its incorporation until 10 January 2020, मतलब 11 सालों के लिए तकरीबन. Grant has never been an employee or a director of Dub Limited. For the tax year 21-22, Delroy and Grant are both higher rate taxpayers. They have each made other disposals of assets during the tax year 21-22, and therefore they have both already utilized their annual exempt amount for this year. Okay. On 28th March, Marlon sold a house for 497,000, which he had owned individually. The house had been purchased on 22nd October 2006 for 152,600.
Throughout the period of ownership, the house was occupied by Marlon and his wife Alvita as their main residence. तो आप PPR और ये सब चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए. 1/3 of the house was always used exclusively for business purposes. तो फिर 1/3 अगर business purpose के लिए है तो personal purpose के लिए कितना है? 3/4. Business asset disposal relief is not available. For the tax year, Marlon is a HRTP, but Alvita did not have any taxable income. This will remain the case for the tax year. Neither of them has made any other disposal of assets during the year. Okay. What is grant CGTL for the tax year in respect of the disposal of the shares? So हम जाते हैं shares की तरफ वापस और let's find it out. So उसने सबसे पहले किया क्या है? 18 मार्च 2022 ग्रांट में शेयर सेल कर दिए 240,000. तो हमारे पास सबसे पहले प्रोसीड्स आ जाती हैं. प्रोसीड्स 240,000. ठीक है. उसके बाद वी नीड द कॉस्ट. आफ्टर द कॉस्ट गेन आ जाएगा. गेन के बाद ए, फिर यू विल हैव द टैक्सेबल गेन एंड देन द सीजीटी. ठीक है. हायर रेट टैक्स पे कोई रिलीफ नहीं मिल रही तो 20% पे होगा. ठीक है. सो अब हम वर्किंग करते हैं पहले कॉस्ट के लिए. सो फॉर कॉस्ट Delroy made a gift of 25,000 ordinary shares to his son. Market value उस डेट पे थी 240,000. तो हम सीजीटी पर्पस के लिए डीपी में हमेशा मार्केट वैल्यू लेते हैं. तो 240,000. ठीक है. इलेक्शन वो करवा रहे थे. कॉस्ट आपके पास गिवन है, दैट इज 25,000 पार पे. ठीक है. और व्हाट आर दे डूइंग इज दैट कि वो गेन हेल्ड ओवर हेल्ड ओवर इसकी तरफ जा रहे हैं. ठीक है. तो 240,000 में से हाउ मच वी विल सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट टू 25,000. तो यू विल हैव इट 215,000. तो आप जो कॉस्ट लेंगे वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 25,000. ठीक है. तो गेन आ जाएगा आपके पास वही जो वो हेल्ड ओवर करवाएगा. एंड देन उसने कहा था कि वो सारी की सारी एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट्स अपनी यूज कर चुका है. दे बोथ हैव यूटिलाइज्ड देयर एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट्स. तो फिर इट विल बी 0. ओके. एंड योर टैक्सेबल गेन. और अब आप क्या करेंगे? 20% लगा देंगे इसके ऊपर. सो दिस गिव्स यू 43,000. दिस इज योर CGTL. ऑप्शन ए. Okay, which two of the following statements would have been true in relation to the CGT implications if Delroy had instead sold the 25,000 shares in Dub Limited himself for 240,000? और फिर वो जो कैश प्रोसीड्स उसको मिली थी वो उसको गिफ्ट करता तो क्या होता? सबसे पहली चीज कंडीशन फुलफिल हो जाती. एक तो डेट्स आप देखें तो बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ उसको मिल जाती. ठीक है. लाइबिलिटी वुड हैव बीन पेड लेटर. नो, इट वुड नॉट हैव बीन पेड लेटर. 31 जनवरी उसकी डेडलाइन है वो तभी भी फुलफिल होती. द कैश गिफ्ट वुड नॉट हैव बीन अ चार्जेबल डिस्पोजल. ठीक है. वो पहले भी होल्ड ओवर रिलीफ के लिए क्वालिफाई कर रहा है, वो अब भी करेगा, लेकिन क्या होता है कि वो चार्जेबल डिस्पोजल नहीं होता. ठीक है. सो इट विल बी 1 and 3. व्हाट इज मार्लिन्स चार्जेबल गेन? तो मार्लिन की इंफॉर्मेशन पे चलते हैं. मार्लिन का चार्जेबल गेन. ठीक है. उसने अपना घर सेल किया है. कितने का खरीदा था? 152,000. So chargeable gain would be she used it 1/3 for business use. Rest of that would be
एग्जेम्प्ट आउट देयर, ठीक है, इसलिए मैं 3/4 करके वो सब नहीं किया, डायरेक्ट आप 1/4 कर लें. What is the amount of CGT which could have been saved if Marlon had transferred 50% ownership of the house to Alvita prior to disposal? Examiner के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं. तो क्या होता है, जैसे आप बताया बस ने अलविटा की कोई इनकम नहीं है, तो उसकी सारी एग्जाम्पशंस एज इट इज हैं, तो अब वो टैक्स सेविंग हो सकती है. बी वो हायर रेट टैक्स पेयर है, तो शी कैन बिकम द बेसिक वन. सो सबसे पहले जो एनुअल एग्जाम्पशन अमाउंट उसकी सेव होगी, ठीक है, तो वो किस पे सेव होगी, हायर रेट पे, ठीक है. फिर हम ऐड करेंगे द उसका जो बेसिक रेट बैंड है वो फिल होगा, ठीक है. अब वो कितने पर होगा, मार्जिन पे वर्किंग कीजिए हमेशा 28 - 18, तो इट विल बी एट 10%, ठीक है. टोटल इट 7 2 Why would it have been beneficial if Marlon had delayed the sale of the house until 6 April 2022? अगर वो डिले कर दे तो उसको सबसे सबसे बड़ा जो उसको फायदा होगा वो क्या होगा, उसकी लाइबिलिटी डिले हो जाएगी, ठीक है. सीजीटी लाइबिलिटी वुड हैव बीन पेड लेटर, सही है. लोअर रेट बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा. टू एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट्स ऐसा कभी नहीं होता, साल में एक ही होती हैं. प्राइवेट रेजिडेंस वुड हैव बीन ग्रेटर नहीं, वो तो डिपेंड करता है आपकी ओनरशिप टाइम पे और आप कितना कितना अर्सा उसमें रह रहे हैं. तो स्टीज लाइबिलिटी वुड हैव बीन पेड लेटर, ठीक है. तो वी आर डन विद दिस. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट इज फॉर आईएसटी, जस्ट रीड इट आउट. ओके, स्टार्ट करते हैं. What is the total net value for the property and insurance policy which will have been included in the calculation of Opal's chargeable state? ठीक है, तो इसकी स्टेट बनानी है अब. So chargeable state उसकी is valued at 1,000 to 5,000. She owns a property which is her main residence. सबसे पहले ये देखेंगे. Repayment mortgage is not allowed, तो हम उसको नहीं, sorry, it's a repayment mortgage, so we'll subtract it. Outstanding repayment mortgage. Okay, that's not the endowment one. So इसके लिए स्टेट के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है 374,000, माइनस करेंगे रीपेमेंट मॉर्गेज, नेट वैल्यू आ जाएगी. करंटली ओके, लाइफ विच विल पे प्रोसीड्स ऑफ 442,000, तो हमें एट द इवेंट ऑफ डेथ हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 442,000, ठीक है. तो यू विल हैव द टोटल नेट वैल्यू 656,000, ठीक है. Which two of the following amounts will have been deducted in calculating for Opal's chargeable state? The state में से कौन से allowable deductions होती हैं? Do you deduct personal loan from a bank? Yes. ठीक है. Promise to pay legal fees? No. That's not allowed. Funeral cost? Yes. ISA's investments? No. So 1 and 3. What amount of IST will be payable in respect of Opal's chargeable state were she to die on 20th March 2022? तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, तो हमारे पास ग्रॉस चार्जेबल स्टेट की जो वैल्यू है वो गिवन है. ग्रॉस चार्जेबल स्टेट जो कि पहली लाइन में क्वेश्चन में लिखी हुई है. आफ्टर दैट इट इट हैड अ हाउस, ठीक है, तो आर एन आर भी उसको अवेलेबल होगा. 175,000, सही है. एन आर बी एट डेथ विल बी देयर. उसमें से जो उसने ट्रांसफर की है अमाउंट कुछ यूज किया है उसने, लेट्स सी. She made a gift on 14 August 2011, or November, she made a gift of 220 to her son. So, and when she died, okay, 22 में she died. खैर, पीटी डॉटर का तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट 220 का नहीं हो रहा. सो हम इधर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इसको. दैट्स जीसीटी.
और डेथ पे आईएसटी कितना पेबल होता है? 40%. सो दिस गिव्स यू 298,000. By how much would the IST payable on Opal's death be reduced if she were to live for another 7 years until 20th March 2029? अगर वो 7 साल तक और जिंदा रह ले तो क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल. जो उसने एक और पीटी किया था, ठीक है, वो सेव हो जाएगा. सही है. तो वो कितने पे सेव होगा? 40% पे सेव होगा. तो स्ट्रेट अवे हम उसकी वर्किंग करेंगे. ये जो 220 है, 220,000, और ये स्ट्रेट अवे 40% पे इट विल गेट सेव्ड. सो 88,000 आपकी सेविंग हो जाएगी. तो आप ये देखें कि डेथ जैसे डिले हो जाए, लेट है, तो कितनी सेविंग उसको करके दे रही है वो. ठीक है. Which two of the following conditions must be met if a pal wants to make gifts out of her income so that these gifts are exempt from IST? So to remember the conditions, gifts cannot exceed 10% of income. ऐसा नहीं है. Gift must be habitual. Yes, it must be habitual. तो exempt हो जाता है IST से. जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करते हैं, स्कूल की फीस देते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ योर इनकम. और क्या हो सकता है? पाल मस्ट हैव इनफ रिमेनिंग इनकम टू मेंटेन हर नॉर्मल. ऐसा नहीं है कि आप एक हैबिचुअल गिफ्ट किए चले जा रहे हैं और फिर आप गरीब हो गए. सही है. कोई भी अपने फीस पे करके और अपने ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर करके गरीब नहीं होता. ठीक है. तो 2 and 3 मस्ट बी देयर. और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप हर महीने गिफ्ट देंगे, हर क्वार्टर पे, हर साल, या कुछ इस तरह होगा. ठीक है. 2 and 3 आर द कंडीशंस. सो वी आर डन विद आईएसटी एज वेल. ओके, वैट का क्वेश्चन है. Following information is available in respect of Glacier Limited's VAT. Invoices were issued for sales of 44,600 to VAT registered customers. Of this figure, 35,200 was in respect of exempt sales and the balance in respect of standard rated sales. The standard rate is exclusive. In addition to the above, on 1st March, Glacier Limited issued a VAT invoice for 8,000 plus VAT of 1,600 to a VAT registered customer in respect of a contract which will be completed on 15th April. Customer paid for the contract in 2 installments. ठीक है, एक महीने के गैप से. MD of Glacier is provided with free fuel for private mileage driven in her company motor car. During the quarter ended, the total cost of fuel for business and private mileage was 720, 270 was for private. The relevant quarterly scale rate is this, is inclusive. For the quarters ended 30th September 2020 and 30th June 21, Glacier was 1 month late in submitting its VAT returns and paying the related VAT liabilities. All of the company's other VAT returns have been submitted on time. Now the requirement. What is the amount of output VAT payable? ठीक है, output VAT जो है वो किस पर है? That is on sales. ठीक है. सेल्स की फिगर कितनी है? 44,600. ऑफ दिस फिगर 35,200 एग्जेम्प्ट है, तो हम वो माइनस कर देंगे. 44,600 माइनस, ठीक है. सो आप उसको मल्टीप्लाई करा देंगे इस अमाउंट को 20% से फॉर द आउटपुट वैट. और क्या चीज है? एंड देन यू आर हैविंग 1,600. ठीक है, कस्टमर के लिए, तो ये भी आपका आउटपुट वैट है. सो योर टोटल आउटपुट वैट विल बी, this is 3,480. Calculate the amounts required to complete the following sentence. Glacier Limited will include output VAT of, okay, एंड इनपुट वैट ऑफ ऑन इट्स वैट रिटर्न फॉर द क्वार्टर एंड. ठीक है. जो कंपनी की मोटर कार है उससे रिलेटेड हमें करना है, तो हम दोनों आउटपुट इनपुट निकालेंगे इसके लिए. सो फॉर दैट व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी विल बी डूइंग इनपुट वैट तो आ जाएगा इस फिगर पे जो टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल है. सो हम इनपुट वैट निकालते हैं. ओके, रेलिवेंट क्वार्टरली
स्केल रेट लेंगे हम इसके लिए, दैट इज ऑल्सो इंक्लूसिव, तो हम इसमें से वैट निकालेंगे। सो दिस इज 80। What surcharge penalty would Glacier Limited be charged if the company is 1 month late in paying its VAT liability? So 1 month, if the person is 1 month late, तो क्या होता है उसका जो surcharge period है वो extend हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो 1 month लेट हो जाता है अपने Q31 March 2023, तो वो अपने surcharge period में कौन से टाइम पे चला जाएगा? दिस विल बी क्वार्टर है 30 सितंबर 2020, तो उसका उसको वैट देना है महीने के अंदर अंदर। सो ओके, सेकंड सरचार्ज आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो सेकंड सरचार्ज पे 5% होती है लाइबिलिटी। स्ट्रेट अवे आपने सिर्फ ये पिक करना है। 31 March 2023 तक extend हो गया है। Okay, 29. What is the minimum requirement which Glacier Limited needs to meet in order to revert to a clean default surcharge? और उसका एक ही तरीका होता है, वो क्या होता है? सबमिट, आप अपनी 4 consecutive VAT return सबमिट करते हैं और टाइम पे अपनी सारी की सारी VAT liabilities पे करते हैं। So submit 4 consecutive VAT on time, no, not this only, submit any 4 returns and also pay the related VAT liabilities on time। ऐसा नहीं है कि कोई से भी consecutive, pay 4 consecutive VAT liabilities on time, submit 4 consecutive VAT returns। So this will be option number D, consecutive returns दें चारों के चारों, यानी पूरा साल, और फिर आप सारी liabilities भी टाइम पर देंगे। Glacier Limited will be required to issue a VAT invoice, complete the following sentence. Okay, this is drag and drop. Glacier Limited will be required to issue a VAT invoice when standard rated supply is made to a VAT registered customer, ठीक है। VAT registered customer है तो उस पे आप फिर he can recover the VAT out there, ठीक है। So we are done with section A and section B. We will be doing for section C like tomorrow, ठीक है। So I hope you have understood. If there are any questions, you can drop in the chat.